is in each and everything. आपका कोई मोबाइल है, कुछ है, सब में क्या है? It has the DSP. We will see how. So right now there is another field that is the artificial intelligence, AI. So it is the most powerful technology that will shape science and technology in the 21st century. It has been claimed. Already it has made the revolutionary changes in the field of communication, medical imaging, oil exploration, radar, sonar, music, in each and everything. ठीक है, म्यूजिक में आप इमेज में देखते हो कि आप मोबाइल में लेके आप कितना कुछ उस पे कर सकते हो. You apply the filters, okay, you crop it, you do anything. All these are what? Are the result of the digital signal processing. Okay, this is the one thing that you come into terms day to day. आप एक इमेज लेते हो, उसको फिल्टर लगाते हो, उसको करते हो. All this is because of the impact of the digital signal processing. Okay, music है, उसकी quality कितनी बढ़ गई है. You hear the songs from the 70s and 80s, and you hear the songs right now. You can see the difference of the quality of the sound. Again, here comes the impact of the DSP. Medical imaging है, you get the directly आप कोई ultrasound computer को देते हो, it tells you what is the problem. Is it clear? Again, it's a result of the DSP because the quality of the images has improved. So this is, including your communication, using your medical applications, including your radars, music, imaging, all that. So, what is basically digital signal processing? It consists of three terms. One is the digital, another is the signal, third thing is the processing. So, basically, this is the processing of the signal in the digital form. So, we should know about the three things. What is the digital? Before that, we should know what is the signal. क्या प्रोसेसिंग होती है. So प्रोसेसिंग के लिए we will have the systems और सिग्नल पे जो प्रोसेसिंग होगी that will be through systems. So your subject is signals and the system. We will discuss the various forms of the signals and how they are processed with the help of the some system. Okay. So basically the DSP and the signals and the system basically are the overlapping subjects. You can see their labels or anything that there is so much overlapping in the scope of the DSP, digital signal processing, and the signals and the system. We can say the signals and the system is the basis of the DSP. पहले DSP signals and system पढ़ाया जाता है, then आपको digital signal processing पढ़ाया जाता है. Okay, have you got it? Now, what is signal? Signal is a function that contains the information that we conveyed. That can be conveyed, that can be manipulated, or that can be displayed. Is it clear? For example, के आपके रूम में कितना टेम्परेचर है? You measure it with some your instrument like artery or anything like that, thermocouple. Okay. You are measuring that. That temperature changes with the time. Okay, that is your basically signal. Okay, how the temperature varies with the time. That is your signal. So signal is a function. Function में क्या होता है? One thing depends on the another thing. Y is equals to ft. Y depends on t. So signal is also basically time. As in the example that I've taken, your temperature is dependent on the time. It varies with the time. Okay. Similarly, you will see the image है. It's your signal. इसमें क्या two-dimensional signal. Audio signal है. All the amplitude varies with the time. Okay. So, as function has two variables, similarly signal has two variables. One is independent, one is dependent. The dependent variable depends on the independent variable. Along the x-axis, what you are used to take is independent variable. Along the y-axis, you are used to take the dependent variable. As in this case, the temperature versus time. Your independent variable is time. It is not dependent on anything. It is moving along. But the temperature is dependent on your time. 10 बजे टेम्परेचर रूम का और होगा, 11 बजे कुछ और होगा, 12 बजे और होगा, 1 बजे कुछ और. Is it clear? So this is the one very simple example I have taken so that concept will be clear to you. In signal, first of all, it's a function. As you know, every function has two variables. One is the independent
One is the dependent. Dependent variable depends on the independent variable. Okay. So this is the first thing is the signal. The other two terms are digital and the processing. So dependent variable is your actual measurement like amplitude. It's also called coordinate or the range जो y axis के along लेते हैं. Independent variable, when and how these are taken. How it varies with respect to the another thing. That is your domain. Abscissa. ठीक है, ये mathematical terms है जो आपने पढ़ी होगी. So if I take the time domain, the amplitude varies with the time. The example I have taken, that is the temperature varies with the time. This is your time domain signal. आपके x axis पे क्या है? Yes. Please switch off your mic. कुछ पूछना है तभी ऑन करेंगे. Varies with time. Your temperature varies with your time. Along the x-axis, what you have taken is your time. So this signal is known as basically time domain signal. Okay. Frequency domain signal, in which the x-axis is your frequency. कौन सी frequency एक signal में किस amount में present है, that is your frequency domain signal. Okay. How do you find the frequency domain signal from the time domain? You will employ the Fourier transform. Fourier transform क्या करता है? Time domain signal को frequency domain signal में आपके पास how the amplitude how something. Time domain signal में क्या है कि amplitude varies with the time, लेकिन frequency domain में क्या है कि x axis के along आपको frequencies होंगी 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज. ओके. एक पर्टिकुलर सिग्नल में 5 हर्ट्ज कितनी प्रेजेंट है, 10 हर्ट्ज कितनी प्रेजेंट है, 15 हर्ट्ज कितनी प्रेजेंट है, 20 हर्ट्ज कितनी प्रेजेंट है. Okay, in that got you got the information about the frequency. Spatial domain, how the signal varies with the distance, as in the case of image. Image में क्या है कि you have the pixels की position, that is your spatial, that varies with the distance along x-axis and along the y-axis. Okay, at particular point, what is the value of the pixel? That is your amplitude, that is your intensity. Black है तो 0 होगी, white है तो 256 होगी. I am talking about the black and white image. Gray varies from 0 to the 256. 125 है, 200 है, something like that. जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, it moves towards the white. जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी, it moves towards the black. Is it clear? So what I want to make it clear, domain represents your, simply take the x-axis quantity. टाइम डोमेन में x एक्सिस पे टाइम होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होगी, स्पेशल में आपका डिस्टेंस होगा. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द डिजिटल सिग्नल. ओके. फर्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल इज एनालॉग सिग्नल. ओके. एनालॉग में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस है, इट कैन हैव कंटीन्यूअस वैल्यू, वो कंटीन्यूअस. सिमिलरली y axis is also continuous. Both variables, independent variable or dependent variable, x axis and y axis variable, both are continuous. Is it clear? Second type of signal is discrete signal. इसमें we will see with an example. ये जो independent variable है वो discrete होगा और dependent variable आपका continuous. Digital में both independent variable and the dependent variables are discrete. Is it clear? Now see here, this is your analog signal. Time कोई भी value ले सकता है, it is continuous. X कोई भी value ले सकता है, it is continuous. So this signal is varying continuously with respect to the time. This is your analog signal. As I pointed out in this, in analog signal, independent variable भी continuous होगा और dependent variable भी continuous. As you can see from this, x-axis varies continuously with the time. Time की कोई भी value हो सकती है, 0.1, 0.001, it is continuous. Similarly, x की भी कोई value हो सकती है, 1.125, कुछ भी हो सकता है, both are continuous. Now see here, इस signal में अब हमने क्या किया? We have done the sampling along the x-axis, independent variable. Okay. We are taking its values at the 0, then at 1,
then at 2, then at 3, then at 4 seconds, then at 5 seconds, and so on. So this signal is defined only at the discrete time. 0 second पे defined है, 1 second पे defined, but it is not defined in at 1.5 seconds. Clear? लेकिन इससे पहले क्या था? Signal, this amplitude is defined at each and every value of the time. It is continuous. But in this, you can see it is defined at 0, then it is defined as 1, then it is defined at 2, then 3, and so on. 0 पे 0 value है, 1 पे 0.6 value है, 2 पे 1.2 value है, similarly 3 पे 1.6 value है, and so on. Is it clear? Now you can see x-axis को हमने discrete कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन y-axis still continuous है. 0.6 भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है. Amplitude can have any value, any continuous value, but the y-axis can have only discrete value. 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, and so on. Is it right? So this is we have moved from the analog signal to the y-axis is continuous, but x-axis. What I have discussed is that analog signal is continuous along the y-axis and the x-axis. T can have any value, similarly x can have any value, continuous value. But in the discrete signals, we can have only the discrete values along the x-axis. This signal is defined only at the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But along the amplitude, or you can say along the y-axis, we can have any values. Okay, it can have 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, something like that. So y-axis is continuous, but the x-axis is sampled or is made discrete. This is called your discrete signal. You can see in analog signal, both independent variable and dependent variables are continuous. But in discrete signals, your independent variable is discrete and dependent variable is continuous. Okay, so this is your discrete signal. Now you can see here, this is your signal that is digital. X-axis is discrete and y-axis is also discrete. At 1, you have 4. At 2, you have 5. At 3, you have 4. Now it can have the value 4, 5, 3. But it cannot have the value 4.5. देखो यहाँ पे actually कितनी थी? 5 point something. But it is now represented as 5. In digital signal, both x-axis and y-axis are discrete. Both are sampled. A continuous signal को digital बनाने के लिए क्या करते हैं? You sampled it along the x-axis, then you sampled it along the y-axis. In this way, your analog signal first is converted into the discrete, then it is converted into the digital. You can see analog signal, you do the sampling, it becomes discrete signal. Okay. Then that discrete signal is discretized. Discretized means it can have certain values of the amplitude. Okay, that signal is known as the digital signal. As you do in this, आपका ये continuous signal था जो white show हो रहा है, basically. Now you sample it. You sample it along the x-axis. You take values at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Okay. 1 पे value कितनी है? 4. 2 पे basically कितनी है? 5.2. 3 पे कितनी है? 4, and so on. Then you discretized it along the y-axis. इसको आपने 4 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 3 ले लिया, so it is less than 3. So 6.5 उससे ज़्यादा है वो 7 लिया जाएगा, जो 6.5 से 6 तक है that will be taken as the 6. Similarly 5.5 से जो ज़्यादा है that will be taken as the 6, जो 5.5 से कम है that will be taken as the 5. So along the y-axis the signal is discretized and the signal becomes digital. So this is analog signal. सैम्पलिंग करके उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया, देन डिस्क्रीटाइज करके उसको अपने डिजिटल सिग्नल बना दिया. Is it clear? So now so far we have learned the concept of the signal, that is basically a function. Then we have discussed the 3 types of the signal. One is analog, another is the discrete, third is the digital. Now
signal, digital signal. Now we are familiar with the digital signal. Third thing is DSP में third term क्या थी? Digital signal processing. Now we come to the term of the processing. What is processing? It has two things. That is transformation or the manipulation. Okay. Transformation क्या है कि किसी सिग्नल में रॉ सिग्नल में कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती है. To extract that, what we do the transformation. A very popular or the simple example is the Fourier transform. आपका टाइम डोमेन सिग्नल है, it tells कि how the signal varies with the time. लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट. राइट? अगर हमने फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है कि इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, वी हैव टू एम्प्लॉय सब ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी उससे. इज क्लियर? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जब आप एम्प्लॉय करते हो, इट कन्वर्ट्स द टाइम डोमेन सिग्नल टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन. ये आपको बता देता है कि कौन कौन सी प्रेजेंट है फ्रीक्वेंसीज और किस प्रोपोर्शन में, कौन सी फ्रीक्वेंसी कम प्रेजेंट है, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा प्रेजेंट है, कौन से उससे ज्यादा. इज इट राइट? So this is one example of the processing, that is the transformation. Another thing is manipulation. Manipulation में क्या है? Amplification. आप सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. फिल्टरिंग कर रहे हो. फिल्टरिंग क्या होता है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पास होती हैं और कुछ को आप रोक देते हो. That is your filtering. Is it right? आप ट्रंकेट करते हो, amplification करते हो. All these are examples of the manipulation. Is it clear? So now what we have is digital signal processing. Signal in the digital form is processed. Processing में क्या है? Transformation and the manipulation. Okay. Now I think we are quite familiar with the concept of the digital signal processing. Processing of the signal in the digital. Because we take the analog signal, we convert it into the digital, we give it to the computer. Okay. वहाँ पे इसकी processing होनी है. But next comes the concept of the DSP. Because DSP is nothing but these are some algorithms. It is a mathematics, a technique. Now see this definition. It is a mathematics, algorithms, a techniques used to manipulate the signal after these are converted into the digital form. Is it clear? So basically जो real life में है, the signals are analog in nature. Using to analog to digital converter, you have to convert it into the digital form. Then you give it to your PC. PC पे आप क्या करोगे? You will write some algorithms with the help of some software. Is it clear? I will take one example कि आपने amplification करनी है by 2. उसको double करना है, ठीक है, उसके amplitude को. Mathematically क्या करना पड़ेगा आपको? Algorithm क्या होगा? Just you multiply it by 2. आप कोई पीसी में ऐसा प्रोग्राम लिखें कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होगा? एम्पलीफाई हो जाएगा बाय 2. अगर उसको 4 गुना करना है, यू मल्टीप्लाई इट बाय 4. इज इट राइट? सो इन डीएसपी यू राइट सम मैथमेटिक्स, यू राइट सम एल्गोरिथम दैट मैनिपुलेट द सिग्नल्स. विच सिग्नल्स? ओनली डिजिटल सिग्नल्स, बिकॉज़ पीसी वर्क ओनली ऑन द डिजिटल. फॉर एग्जांपल आपकी इमेज है, दिस इज योर सिग्नल. उसकी प्रोसेसिंग आप कैसे करते हो? एनहांसमेंट. ठीक है, आप ये टूल सारे यूज करते हो, एनहांसमेंट करते हो, उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर लेते हो, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट उसका चेंज कर सकते हो. कंप्रेशन ऑफ इमेज. आपने इमेज को कैरी करना है, ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. इट इज कंप्रेस्ड फ्रॉम बिफोर इट्स ट्रांसमिशन. ये स्टोरेज से पहले इसको आप कंप्रेस कर सकते हो. क्लियर? जेएफएक्स फाइल्स हैं दैट आर बेसिकली आर यूज्ड फॉर द कंप्रेशन, ओरिजिनल इमेज को कंप्रेस करने के लिए. So that compression is also your processing. That enhancement is also your processing. Compression किससे होती है? Enhancement किससे होती है? Algorithm से. अब mathematical algorithms लिखते हो in the form of the software into the PC that do the processing on the digital signal. Is it clear? देखो DSP में क्या कुछ लर्न करने के लिए होता है कि लर्निंग जनरल कंसेप्ट. पहले जनरल कंसेप्ट है, वी विल सी कि कन्वोल्यूशन क्या होती है, समथिंग लाइक दैट. ओके, जो हम स्टार्टिंग में ही करेंगे कि सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे करना है. ये कोई बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो जो दैट आर एप्लीकेबल टू द फील्ड एज ए होल. चाहे वो आप इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हो, चाहे ऑडियो प्रोसेसिंग कर रहे हो, ओके, किसी तरह की भी प्रोसेसिंग कर रहे हो, वो कंसेप्ट सारे फील्ड में यूज होते हैं. दैट वी विल लर्न इन दिस सब्जेक्ट. Learning specialized techniques for your area of interest.
Okay, that is not included in your scope of the subject. ठीक है, वो that is on the research level कि medical imaging में कोई बंदा research कर रहा है, वो उसके कोई particular concept समझेगा, लेकिन आपने क्या concept समझने हैं that apply to the field as a whole, जो सारे medical imaging में भी use होंगे, audio में भी use होंगे, radar में भी use होंगे, something like that. Okay. There are some allied areas to study to specialize in DSP. Probability use होती है, disease, as I told you कि algorithms are nothing but some mathematical technique. So उसमें probability, statistics, decision theory, digital electronics, numerical analysis, okay, but only to specialize in the DSP. So in whole of this semester, what we will be concerned with some of the concepts, some of the basic concepts. Of course, different types के signal समझ आ जाए, convolution समझ आ जाए, something like that. Fourier transform समझ आ जाए, that will be our aim. Okay, we will go into the specialization. तो masters है या PhD है जहाँ पे research level पे. How it is evolved. Invention of calculus. As I've told you, okay, DSP is nothing but the mathematics. Okay. Physical phenomena tha, that will be represented in terms of the constant and differential variable. This is the origin of the DSP. Math bana tabhi DSP hai. Is it clear? Digital signal processing was done using the electronic circuits and the mechanical devices till 1950. पहले तो कोई PCs नहीं थे, उसका कोई concept ही नहीं था digital signal processing का. कि सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जिसमें आपका एम्पलीफायर लगा हुआ है, ओप एम्प लगा हुआ है, उससे आप यू डू द प्रोसेसिंग तब भी होती थी, बट नॉट द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, एनालॉग प्रोसेसिंग. उससे पहले मैकेनिकल डिवाइसेस से आप प्रोसेसिंग करते थे. जब डिजिटल सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए, पीसीज इंट्रोड्यूस हुए, उनकी कॉस्ट बहुत हाई थी. ओके, दीज आर जस्ट यूज्ड टू फॉर द सिमुलेशन पर्पस. ये एनालॉग हार्डवेयर जो आपने यूज करना है उसको सिमुलेट करके देख लो पीसी पे, whether it's working or not. Is it clear? So digital systems were used to simulate the signal processing system before implementing it in the analog hardware. So obviously it results in what? Saving of engineering and economic resources. Otherwise तो आपने हार्डवेयर बना लिया, सारी वायरिंग कर ली, नहीं चल रहा, again you have to do that. It is a wastage of your resources. Digital implementation. Some sophisticated signal system processing can be implemented only on the digital system. You will see कि FFT वगैरह है जो वो उसका कोई एनालॉग काउंटर पार्ट है ही नहीं. Then comes the concept of the all digital implementation. कि आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो for the processing, not for the simulation. पहले सिमुलेशन होती थी, लेकिन फिर वो सारी प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर पे होनी शुरू हुई. जैसे जैसे कॉस्ट कम होती रही पीसी की, all digital implementation comes into the scene. That is a development into the micro technology, VLSI वगैरह. जब टेक्निक्स बढ़ती गई, कॉस्ट कम होती गई, पावर कंजम्पशन कम होती गई, एंड डीएसपी प्रमोट होती है. So what are the advantages of DSP? It can be realized with general purpose PC or the microprocessor. ठीक है, एक आप PC लेके उससे कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हो by writing some mathematical algorithms. It can simulate the analog system. As we have discussed previously, यही नहीं है कि implementation के लिए you can, these can be used for the simulation purposes. आपने कोई एनालॉग सिस्टम ही बनाना है, उसको सिमुलेट करके देख लो कि इट्स वर्किंग और नॉट. वर्किंग कर रहा है तभी वायरिंग है उसका, हार्डवेयर बनाओ, अदरवाइज उसको कोई डिजाइन चेंजेस कर सकते. दिस इज अनदर यूज ऑफ द डीएसपी. Realize signal transformations that cannot be implemented with the continuous time or analog hardware. As I told you कि FFT है, fast Fourier transform. Okay, उसका एनालॉग काउंटर पार्ट कोई है ही नहीं. अगर आपको FFT यूज करनी है, you have to go for the digital implementation. You have to go for the digital signal processing. Operation of the digital circuit does not depend upon the precise value of the digital signal. Thus, digital circuits are less sensitive to the tolerance of the components and the independent of temperature, aging, etc. Because analog processing में क्या है कि सिग्नल की वैल्यू कुछ थोड़ी चेंज होगी, it affects your overall result. ठीक है, लेकिन डिजिटल सर्किट्स में क्या है, it works with the zeros and the ones. 0 वोल्ट आपका 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट आपका 0 है, 5 वोल्ट एडेड भी आपका 1 है. ओके, वो 5.1 होगा या 4.9 होगा, that will be taken as the 1. Is it clear?
सिमिलरली जो 0 है 0.1 होगा, 0.15 होगा, it will be taken as a 0. So as I written, the operation of the digital circuit do not depend upon the precise value of the digital signal. थोड़ा बहुत tolerance components की होती है, that doesn't come into play in the case of the digital signal processing. Temperature से थोड़ी बहुत resistance की value change होगी, signal की value change होगी, that affects the analog processing but does not affect the digital processing. Clear? So highly sophisticated and complex digital signal system processing can be integrated on a single chip. ये नहीं है कि आप DSP के लिए आपको एक PC चाहिए. You will see कि DSP तो आपके मोबाइल में भी है. उसमें ये नहीं है कि आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, आप एक छोटी सी चिप लगी हुई है जिसपे आपका एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड जो डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो उस पे एम्बेड हो रखा है. ओके, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द DSP. ये छोटे छोटे चिप्स पे आप एक पर्टिकुलर वो कर देते हो. वॉशिंग मशीन में DSP होगी, आपके मोबाइल में DSP होगी. A processor can be shared among a number of signals by the time sharing, thus reducing the cost of processing per signal. ये नहीं है कि आप एक सिग्नल के लिए हुकअप कर दोगे अपने पीसी को. As you know, it has a lot of processing power. A number of signals can be processed. तो cost of processing per signal देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम है. Otherwise तो एनालॉग जो आपके सिस्टम्स है बहुत चीप है. पीसी आपका महंगा है. But PC can be shared among the number of the signals, time sharing basis, multiplexing. Digital processing is used for low frequency signals, whereas the inductors and capacitors needed for analog processing would be large. Because impedance क्या होती है inductance, XL is equals to 2 pi F into L. Frequency कम होगी, XL बहुत ज़्यादा कम होगा. Is it clear? Almost approaching zero. उसको एक reasonable value देने के लिए you have to use large value of L, large value of the inductor. Similarly, capacitor में अगर F कम है, XC tends to be infinity. To make it reasonable, you have to use a very large value of the capacitor. Is it clear? There are no such limitations in the case of the DSP. So, or basically you can say that analog systems are not suitable for the low frequency signals. For low frequency signals, you have to use basically DSP. Again, there is flexibility in reconfiguring the DSP operations by changing the program rather than the redesigning the hardware in the analog system. देखो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एम्पलीफाई करना है बाय फैक्टर ऑफ 2. ओके, अगर आप चेंज करके उसको बाय फैक्टर ऑफ 4 करना चाहते हो, जस्ट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीराइट द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम में आप 2 की जगह मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 की जगह मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो. अगर एनालॉग में करना है आपको क्या है कि आपको सारा हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू चेंज द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस, यू हैव टू चेंज द वैल्यूज ऑफ द कैपेसिटेंस इन. So this is the one of the biggest advantage of the DSP is reconfiguring के लिए आपको सिर्फ प्रोग्राम ही चेंज करना है, पीसी को कुछ चेंज नहीं करना. You have to just write some instructions and it works well. लेकिन एनालॉग सिस्टम में अगर आपको कुछ चेंज करना होता था तो आपको पूरे का पूरा हार्डवेयर चेंज करना. Is it clear? Easy storage of digital data, as you know कि digital data स्टोर करना बहुत easy है. आजकल तो हार्ड डिस्क छोटी छोटी आती हैं SSD, आप कहीं भी ले जाओ. डाटा इज ट्रांसपोर्टेबल, एक जगह स्टोर किया, you can work on that in some other institute. It can be processed offline storage के बाद. Limitations, obviously you have to employ A to D converter and D to A converter because most of the signals are analog in nature in real time. अगर आउटपुट आपने यूज करनी है, again it has to be in the analog form. जैसे जैसे ज्यादा कंपोनेंट्स बढ़ेंगे complexity बढ़ती है. Limited range of frequencies available due to the sample and hold circuit and A to D converter. डिजिटल सिस्टम्स में आपके एक्टिव कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह, उनकी पावर कंजम्पशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द पैसिव कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंसेस एंड इन द एनालॉग प्रोसेस. सो दीस आर जस्ट अ लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन स्पेस में फोटोग्राफ एनहांसमेंट, अगेन इन इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक, डाटा कंप्रेशन. मेडिकल में मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग के आपने कोई इमेज ली, जैसे सीटी स्कैन किया दिमाग का, देखना है कि इसमें कैंसर है कि नहीं. इट्स एन एग्जांपल ऑफ द डायग्नोस्टिक इमेजिंग. ईसीजी एनालिसिस, हार्ट की ईसीजी लेते हैं, वन थिंग इज कि डॉक्टर उसको एनालाइज करता है. इट कैन बी एनालाइज्ड बाय द कंप्यूटर्स. देयर कम्स इनटू योर अगेन डीएसपी. मेडिकल इमेज स्टोरेज है, आपने मेडिकल इमेज कोई ली स्टोर की, बाहर पीजीआई जाके आपको दिखाना है उसको. ओके, अगेन कम्स इनटू द डीएसपी. कमर्शियल है कि इमेज साउंड कंप्रेशन या उसकी प्रोसेसिंग है.
Okay, sound quality as I've told कि कितनी improve कर गई है. That is just because of the processing. Movie में special effects होते हैं. Again, it's a DSP. Telephones में voice, data compression, echo reduction, signal multiplexing, filtering, military में, radar में, all communication में. To name anything, it has DSP. Okay, in nutshell, I can say कि आप किसी भी technology जहाँ use हो रही है, वहाँ पे DSP use हो रही है. You've got it. So today, just what we have discussed is the overview of the digital signal processing. What is digital? What is signal? What is processing? Okay, their advantages and the disadvantages and their application. In next lecture, we will come to this part, actual part, the concepts. As I told you कि हमने इस subject में इस semester में basic concepts समझने हैं. Okay. So next lecture is on Wednesday, first lecture. Thank you. So there are 48, 49 total.